Hello guys, this is Aisha and this is Mohammed Alha. Thank you Hi. Aisha for coming over here as a co-host. And guys, we are hosting our annual session, which is about what Claude Code for free. So we are waiting for our guest, that is Tanzil, and Aisha will gonna carry forward with you guys. Like I have some stuff to do. So Aisha, the stage is all yours. I'm gonna put myself down, and you can take up and discuss the stuff. Like you can tell people that what we are going to do about like Cloud Code, like how we are going to install this stuff, and there's a secret thing that is going on as well, like how they can gonna use. Omar, we are starting in like 5 minutes. We're just waiting on him, so he'll be joining us, and we definitely do it. By the way, Aisha, how do you feel right now? How are you? So how is it going on? Thank you so much, Tilha, first of all, for the nice welcome, as always. Um, I'm doing okay. I am a bit excited for today because Claude Code is something that every single person out there on the internet is talking about. Not only locally but internationally as well. So I'm gonna switch to the language if you guys don't mind. Yeah, So just yeah. comment in the comments. या सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज बिकॉज every single person हम जिससे भी बात करें या मिले students founders and then even जो AI के educators हैं everyone's talking about AI and AI and then Yeah. पहले बहुत ज़्यादा लोग चैट जीपीटी के ऊपर फोकस थे but now चैट जीपीटी का जो जो उसका एक ऑरा था वो शिफ्ट हो रहा है क्लाउड कोड की तरफ एंड नॉट ओनली क्लाउड कोड Yes. बट क्लाउड इटसेल्फ so जो उसके models हैं sonnet and also it's actually right now competing with Google so I think it's going to be a really good session today and at the same time हमें बहुत सारे लोगों को नहीं आइडिया कि कहाँ से स्टार्ट करना है क्या सीखना है पहले क्या करें एंड ऑल सो इतना कुछ नहीं आइडिया होता लोगों को सो हम ये सारी चीज़ों में कवर करेंगे कि एक तो क्लॉड का लोग नाम सुन के डर जाते हैं कि ओ भाई क्लॉड है तो आई डोंट नो क्या होगा like Yeah. random lies and then terminals and then codes and blah 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 so उसका नाम ही थोड़ा सा इतना हैवी है बट आई थिंक Mhm. आज के सेशन के बाद ये मेंटालिटी चेंज हो जाएगी सबकी आज के सेशन के बाद सबको एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा यूज़ करते हुए एंड हम ये भी देखेंगे कि क्यों इतनी ज़्यादा हाइप है अभी हमने बात की कि बहुत ज़्यादा हाइप है क्लाउड कोड की सो Exactly. इतनी हाइप क्यों है क्यों इतने सारे लोग जो हैं वो बहुत ऑब्सेस हुए हैं क्लाउड की साइड पर और फिर हम ये भी देखेंगे कि हम किस तरह से उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सेटअप कर सकते हैं अपने अपने कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स में एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो कि उसको अपने मोबाइल फोन्स में भी यूज़ कर रहे हैं इंक्लूडिंग मी Exactly. Yeah. हम उसका पूरा सेटअप सीखेंगे आज के किस तरह से किया जा सकता है एंड देन फिर हम एक छोटा सा लाइव डेमो भी करेंगे और ताकि हमारी ऑडियंस जो है वो आज देख सके कि किस तरह से एक जो हम स्पीड की बात कर रहे हैं वो कितनी ज़्यादा लाइक इतना ऑप्टिमाइज्ड है फॉर स्पीड एंड हम किस तरह से उसको लेवरेज कर सकते हैं और अपने अपने एप्लीकेशंस को अपने आइडियाज़ के ऊपर काम कर सकते हैं उसको बिल्डअप कर सकते हैं so Definitely. I think it will be a pretty good session today. Yeah. Inshallah. By the way, I heard like you're building out a product. So how much is it? And like I've been following up your social media. So any updates on it? It's harder than I actually thought. Yeah. I actually have done many products in the past जिसके अंदर मैंने इसी तरह से दिन रात काम करके उसको live किया है and then I actually got to earn some money out of it as well. मगर abhi like I challenged myself to launch it within a week. So I think I had a talk with you last Okay. Monday कि Yeah. मैंने इसको फाइनल करना है फ्राइडे तक एंड देन आई वाज वर्किंग सो हार्ड to actually make it live but I couldn't do it on Friday because I found out that live करना is not that important as कि उसको viably live करना अगर वो I live
and if it's not even viable from for other people to For the, use. yeah, operational, it should be operational. By the way, Tanzil is here, so let me add him on the stage. Hello, Tanzil. Hi, Tanzil. It's really nice to see you today. I the stage is going to be yours today, so you're gonna tell us everything, all the magic that you have been exploring about Claude, and I Yeah. think after this, we all gonna have this confidence that we can do anything we want in the world if we know Claude Code. So, I would really like you to introduce yourself, and then we can go from there. Tanzil, could you like tell us about yourself a bit? Like, how are you feeling? Are you excited for the talk? Tanzil, we are not able to hear you, bro. I think he's having some problems, but it's okay. Connectivity. Yeah. Yeah, Yeah, no it's problem. okay. No. If is there any questions in the comments, like if you guys have any questions, please feel free to ask in the chat. People are asking what are you building? So it's a it's a pretty good In one line. tool. In Okay. one line. In one line. Okay. In few words. Okay. Let's be It's honest. if it's Just three my words. line. Okay, few words. Yeah. I think I challenged everyone in the last session to define their ideas in 3 words, and I think you're taking revenge out of it. But it's okay. I understand. I would say it's for speakers and by speakers. Okay. That's all. Yeah. No need to tell further till you know. Okay. Rahul, I'm going. Rahul. Yeah. Yeah, Go on. sorry. Go on. No, no. Go on. That's okay. That's okay. Go on. Go on. Yeah, so what we are going to do today is we're going to learn about Claude Code and how actually to set it up for free. And then we will do a small live demo of how can we build things today. So what exactly Yeah. are we going to build is it's Tanzil department today, so we're going to have to wait for him. But I Yeah. guess that's what we're going to do today. Hi, welcome back, Tanzil. Hello. Yeah, we can hear you now, Yeah. finally. We can hear you. Yeah. My camera is off, right? I guess, yeah. Yeah. Uh, Like, uh, could you please make it a bit more input, a voice input, a bit louder? okay. I'll amplify my voice, no worries. Is it Yeah, is it sufficient? that's better. Yeah, that's better. Okay. Yeah. Okay. So, So Tanzil, how are you feeling right now, brother? I'm pretty excited because I've been scratching my head off because just Claude just rolled up an update tomorrow, and which Yeah, was uh, getting in the way of you know uh, implementing this whole workshop which was planning I was planning for like a weeks, but yeah, hopefully we will eventually set up Claude Code for free in our machines, and we can yeah, use it freely, and we'll get to know how agent works and how skills, the main feature of Claude is skills, and I believe we will explore it today by yeah, implementing it. definitely. Before Yeah, moving forward, there's a mini presentation yeah, of mine I would like to show. Let yeah, me yeah, yeah. adjust this Please, one. please, please. So I can like give you the stage. You and Aisha could take up, and I'm gonna have some leave, like I have told you guys. So Okay, share the stage is screen. all yours. So Aisha, the stage. It's kind of hard part for me to do to leave this stage, but yeah, I'm gonna have to give some spotlight to Tanzil today. So No, Tanzil, so it would be yours in Tanzil. Okay, yeah, but So the okay. guys Uh, also Tanzil. yep. You know what? Like Aisha's building out a product. Oh, that's great, She'll be Aisha. launching it. Do tell me about it. How about we can Yeah, implement it in like the workshop if we yeah, can build like a feature of it or not?
Yeah, Uh, give it a shot if you can. Yeah, Why not? Why not? My screen is showing. Yeah. but Um. but don't make it so obvious. Okay. Okay. Got your point. Gotcha. Yeah. We don't have some like IP or some kind of stuff over here, so that we don't need to have it so obvious. So this is Sure. why I'm Sure. saying. Sure. That's why Sure. Sure. I asked three words only. Sure. Sure. I got your point totally. Yeah. thank you, Okay. Tanzia. So guys, we are starting now, and good luck, Tanzil, Aisha. I'll be here if you need me. Just ping me So out. Okay. just So before we were starting out, thank you Tala for yeah. having me, and thank you Aisha. Yeah. No problem. Thank you, Aisha, bro. And also in the chat, can you guys ask if they want me to be bilingual, or should I do it just in English? I Because would I don't say know. I would say use a mixture. Okay, okay. That's great. Yeah. So Yeah. basically, we started this whole Claude Code thing started cracking into Claude Code thing started like December. So basically, हमने दिसंबर में ना इसको कोशिश की है हम इसमें मॉडल्स लगाएं, because at the time we didn't have as much as CLI टूल्स जो कि एजेंट्स वगैरह सपोर्ट कर सकें या फिर इतनी अच्छी ऑर्केस्ट्रेशन दे सकें. ऑर्केस्ट्रेशन से मुराद ये है कि इनका जो हैंड ऑफ और डेलीगेशन का जो तरीक़ेकार था वो बहुत बहुत रिफाइंड था. अच्छा, अब बिकॉज ये स्लाइड्स हैं और ये काफ़ी बोरिंग होती हैं, मैं नहीं चाहूँगा कि हम सिर्फ स्लाइड्स देखें. लेट्स गो टू अ वेबसाइट विच आई हैव इन माइंड. सो if you guys have heard about bonsai, तो डू लेट मी नो इन द चैट. किसी ने बॉन्साई के बारे में सुना है? आयशा, इफ यू हैव heard about it. Yes, I have. Yeah, recently So though. yeah. So basically, this whole website changed uh, due to the Claude legal terms. So back in the day, Bonsai was providing, Sonnet for free. So we had this integration. फिर हमने उस पे ना बहुत ऐसे एक तरीके से ट्वीक करके ना हमने जितने काम करने थे फ्री में हमने क्लॉड के थ्रू किए, और ये सारे मॉडल्स वो प्रोवाइड करता था. अभी भी इट्स अ वेटिंग लिस्ट. बेसिकली इट्स अ जापानीज एकेडमिक थिंग. तो वहाँ से हमने ये लिया. अच्छा, स्टार्टिंग में ये बहुत इजी होता था, जस्ट हैव टू पुट दिस ऑन योर, ये चल जाता था. लेकिन अब ये डेप्रिशिएट हो गया. राइट, टाइम मूव फॉरवर्ड. सो देयर वाज लिटरली नो रिसोर्सेज इन द होल इंटरनेट. आई आई रिमेंबर कि Xiaomi launched a model. Xiaomi with, हाँ या Xiaomi launched a model. उसके बाद अब लोगों ने इस पे काफ़ी कंटेंट वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया है. बट आई रिमेंबर Xiaomi का V2 मॉडल था हमारे पास एक, जो कि हमें ओपन सोर्स मॉडल था और जो कि हमें एपीआई देता था. और क्लॉड के साथ प्रॉब्लम ये नहीं थी कि क्लॉड उस वक्त फ्री नहीं था या फिर हम उसे चला नहीं सकते थे. आज ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, सिंस उसने अभी रिसेंटली कल के रोल आउट में अपनी जो मेन जो फाइल थी जिसमें हम कॉपी पेस्ट करते थे कोड, वो भी हिडन कर दिया. लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि दूसरे मॉडल्स के ज़्यादा में से ट्राई नहीं कर पा रहे थे. फिर इन्होंने अपना वो निकाला, क्या नाम है, एपीआई निकाला. देन फिर हम इस पे शिफ्ट हो गए और इस पे भी काफ़ी अर्सा मैंने काम किया. अभी भी इट्स गुड, इट्स सफिशेंट इनफ. मैं ये कह सकता हूँ कि अफार माई एक्सपीरियंस गोज, तो इससे अभी तक तक जो कहा जा सकता है वो सोनेट 4.5 के करीब करीब कहा जा सकता है इन कोडिंग एज वेल एज. तो ये इन्होंने हमें पूरा प्रोसीजर दे दिया. बता एट द टाइम क्लॉड डिडंट न्यू. राइट नाउ ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो क्लॉड ने सू नहीं किया हुआ. देन फिर लेटर ऑन सिंस आई वाज फेड अप विद द रिस्पॉन्सेस, तो हम चले गए थे ओपन कोड पे. थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक जाएगा, लेकिन दिस इज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ क्लॉड कोड बट नॉट एज गुड एज क्लॉड. और आज या कल कल की बात है, कल रात की बात है, तो क्लॉड कोड ने ओपन क्लॉ और ओपन कोड को वार्निंग दे दी है कि दे विल सू इट अगर उन्होंने इन पे एपीआईज लगाई. तो बेसिकली जस्ट हम जो करने जा रहे हैं वो किसी पैरामीटर से
शायद लीगल ना हो, लेकिन इट्स अ थिंग एज वेल एज एजुकेशनल। हम इसको एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लोकल मॉडल्स तक ये। अच्छा, अब मैं स्लाइड्स पे आ जाता हूँ दोबारा, ताकि हम इंट्रोडक्शन ले लें उसकी ऑल्सो। या सो आई गेस प्रेजेंट हो रही है स्क्रीन, आयशा, कैन यू कंफर्म दैट? Yes, your screen is. We can या see your screen. थैंक यू। सो बेसिकली आज हम करने जाएंगे वो क्लॉड कोड को ओपन राउटर के साथ लगाएंगे। फॉर दोज ऑफ यू जिसे ओपन राउटर से का अंदाज़ा नहीं है या फिर ओपन राउटर का पता नहीं है, तो बेसिकली ओपन राउटर इज़ अ मार्केट प्लेस। लेट्स सपोज इट्स अ मार्केट प्लेस। वहाँ पे मॉडल्स बहुत सारे, जैसे चैट जीपीटी हो गया, क्वान हो गया, एनवीडिया का न्यूमेट्रॉन हो गया, स्टेफन हो गया, लिक्विड एआई के मॉडल्स हो गए। ये जितने भी मॉडल्स इंटरनेट पे एग्जिस्ट करते हैं उनका एक यूनिफाइड प्रोवाइडर है। बेसिकली वो करता ये है कि लेट्स सपोज हम इस्तेमाल करते थे पहले एपीआई जेमिनी की इस पे, तो हम जाते थे एआई स्टूडियो पे, फिर जनरेट करते थे फिर जनरेट करते थे उसकी एपीआई की, देन उसको ला के पेस्ट करते थे। बट ओपन राउटर क्या करता है? हाँ, ओपन राउटर ये करता है कि ओपन राउटर हमें एक यूनिफाइड सॉल्यूशन दे देता है उसका, कि हमें सिंगल एपीआई दे दी उसने और हम उसको जाके पेस्ट कर देंगे, एंड इवेंचुअली वो जो है उसमें जस्ट मॉडल का नाम मेंशन करेंगे और वो हो जाएगा। हम जब इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्लॉड कोड की भी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हो जाए, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस कंफ्यूज क्लॉड कोड विद एन यू नो CLI कोडिंग टूल, राइट? सो क्लॉड को जो एज मिलती है वो मिलती है इसकी जर्नल कैपेबिलिटीज़ पे। बेसिकली हमने रिसेंटली एक्सपेरिमेंट किया था क्लॉड से। We used to edit photos with it, and we have edited videos as well. So unlike other tools जो अभी मार्केट में हैं, जैसे जेमिनी हो गया, जैसे को पायलट वगैरह हो गया, they cannot do that. That's why we are opting for Claude Code, and that's why I believe कि ये सबसे बेहतर जर्नलाइज CLI बेस्ड टूल है जो कि हर काम तकरीबन कर सकता है। अच्छा, ऑल्सो अब रीज़न ये बनता है हमें कि इसको क्यों इस्तेमाल करें। दूसरा कि इसमें एक चीज़ आई थी सबसे पहले, जिसे हम कहेंगे एक कैपेबिलिटी, राइट? इट्स लाइक अ सुपर पावर विच वाज गिवन बाय एंथ्रोपिक टू इट। तो होता ये है कि एंथ्रोपिक ने शुरू में इनिशियली हम ये करते थे, क्लॉड को ना बता रहे हैं कि मेरे लिए ये कर दो, ऐसा करो, मुझे ये वेबसाइट का पेज है, काइंडली फिक्स दैट। सो बेसिकली ना उससे हमारा जो कॉन्टेक्स्ट था वो ज़्यादा बढ़ जाता। तो फिर उन्होंने ये किया कि जो है उन्होंने एजेंट्स प्रपोज किए। बेसिकली जो हम लिखते थे, अब एज एन आइडेंटिटी, लेट सपोज हम में से कोई फ्रंट एंड डेवलपर है अगर कोई, तो वो प्लीज़ हैंड रेज कर ले या कमेंट में बताए। तो हम क्या करेंगे, लेट सपोज एक फ्रंट एंड डेवलपर आया, उसे एक HTML की वेबसाइट बनानी या फिर रिएक्ट की वेबसाइट बनानी, ही विल पुट ऑन अ प्रॉम्प्ट, डिटेल प्रॉम्प्ट, और वो फिर इसे मैनुअली रिव्यू करेगा। बट क्लॉड ने ये किया कि क्लॉड ने MD फाइल्स में एक ऐसी सुपर पावर डाल दी कि क्लॉड उन्हें पढ़ के एज एन फ्रंट एंड डेवलपर एक्ट कर सकता था, एज ए कोड रिव्यूअर एक्ट कर सकता था, एज ए एज ए कोई भी पर्सन एक्ट कर सकता था, कोई भी प्रोफेशन एक्ट कर सकता था। लेट्स सपोज हम एक सिनेरियो लेते हैं जिसमें हम, जैसे हमने जो बेस के सिनेरियो है, जैसे वो देखा होगा किसी ने बैंकिंग का, राइट? फाइनेंस का सिनेरियो है कि फाइनेंस में ऑडिटिंग होती है, राइट? तो क्लॉड कोड ने ये किया कि एक ऑडिटर का एजेंट बना दिया और फिर वो उससे काम करवा रहे हैं। मीनवाइल क्या हम डेवलपर्स जो हैं वो इसको देख रहे थे। अच्छा, ओपन राउटर का मैं बता चुका हूँ। बस ओपन राउटर एक वन लाइनर में कहें तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक आपको एड्रेस मिलता है और बहुत सारे मॉडल्स मिलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो ओपन राउटर को एज देती है कि ओपन राउटर ना सिर्फ ऑनलाइन मॉडल्स प्रोवाइड करते हैं यानी क्लाउड में, बल्कि ऑफलाइन भी। बट देर आर सम कंस्ट्रेंट्स विद इट। लेट्स सपोज कि हम यूज़ कर रहे हैं क्वाइन का 3.6 प्लस।
So Coin the 3.6 plus approximately, if I'm not wrong, 27 बिलियन पैरामीटर्स पे आता है. लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम यूज़ कर रहे हैं GPT का OSS विच इज़ एन ओपन सोर्स मॉडल, तो वो भी हमें ओपन राउटर प्रोवाइड करेगा, बट वो क्या होगा, वो हमें मैनुअली पहले मशीन पर डाउनलोड करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर एवरी मशीन सिंस इट्स अ बिग मॉडल. तो हमें फिर हार्डवेयर कैपेबिलिटीज़ भी देखनी पड़ती हैं. तो ये सिंगल एंड पॉइंट वाली जो बात यहाँ पे लिखी हुई है, जस्ट बाय चेंजिंग द नेम ऑफ द मॉडल जो है हम कर सकते हैं. अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन टू अदर स्लाइड, और पहले हम ये देख लेते हैं ओपन क्लॉड दिखता कैसे. सही है. एंड ओपन राउटर बेसिकली. अच्छा, मैं इसका होम पेज पे चले जाता हूँ. बेसिकली अगर आप ओपन राउटर की वेबसाइट पे आएंगे तो ये कुछ ऐसा यूज़र इंटरफेस देती है. यहाँ पे सबसे अच्छी जो बात मुझे लगती है इस प्लेटफॉर्म की, कि ना ये आपको अलाउ करता है रैंक वगैरह देखना है. अगर किसी को स्वी बेंच के बारे में पता हो तो वहाँ पे मॉडल्स की बहुत ज़्यादा रैंकिंग होती है. अभी लेट्स सपोज 23 मार्च तक इन्होंने रैंकिंग दी हुई है कि ये वाले मॉडल सबसे ऊपर हैं, राइट, यूजेज वाइज दी हुई है. अच्छा, इन्होंने लीडर बोर्ड भी दिया हुआ है कि अभी सबसे अच्छा कौन सा मॉडल चल रहा है. अब मैंने कहा था ना कि अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, Xiaomi के मॉडल्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं. इनके यूज़ होने के पीछे वजह ही यही है कि इनके जो पेड वाले वर्जन या फ्री वाले वर्जन, बोथ देयर APIs आर यूज्ड बाय पीपल हु आर क्रैकिंग इनटू क्लाउड कोड, बिकॉज इनकी ऑर्केस्ट्रेशन बहुत अच्छी है. इनकी जो सिंक्रोनाइजेशन है ना विद क्लाउड कोड, इवन इफ इट्स अ थर्ड पार्टी API, it's far more better than any other model. बट फॉर द कोडिंग थिंग ये शायद हमें लगता है ड्रॉबैक में है. अच्छा, ऑल्सो फिर हम अगर थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो यहाँ पे कुछ ग्राफ्स हैं. आई नो बहुत ये वाइब्रेंट है और हमारी आइज़ पे भी इजी नहीं है, लेकिन ये थोड़ी बहुत डेटा वगैरह बनाते हैं फी ओवर इट, कि भाई कौन सी डेट पे कौन सा ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था, किसने मार्केट शेयर ज़्यादा रखा. तो और ये बेंच मार्क का आ गया स्कैटर प्लॉट. सो यहाँ से ना हमें वेबसाइट सॉरी इस वेबसाइट पे हमें जो है सारे मॉडल्स मिल जाएंगे. अच्छा, हमने करना कुछ भी नहीं है. हमने सबसे पहले ये करना है कि यहाँ से API की लेनी है. अच्छा, अब चूँकि हम स्लाइड्स पे ही गो थ्रू कर रहे थे, पहले स्लाइड्स देख लेते हैं और कि हम क्यों करेंगे ओपन राउटर को क्लाउड कोड के साथ यूज़. अच्छा, तो सबसे बड़ा अब वो आता है कि यूज़ केस आता है कि हम ओपन राउटर को क्यों ही इस्तेमाल करें, जब हम जाके अगर कॉइन की API या Xiaomi की API इस्तेमाल कर सकते हैं आगे. आई होप एम आई ऑडिबल आयशा? वांटेड टू आस्क. Yes, you're completely fine. We can see या you. do let me know अगर if someone asks question in the comments, or if I'm going fast, I'll. Yeah, yeah, yeah. Yeah, So there is a question. I was hoping that maybe to a certain points when you close one topic that we can have questions, but it's okay. We can do it right now. sure. Someone is asking, can I run Claude Code on my 16 GB RAM? Yeah, definitely you can run Claude Code as least as 4 GB RAM. And the thing is that there is a condition with that, कि अगर आप कह रहे हैं कि क्लाउड कोड से पे जो मॉडल इस्तेमाल करेंगे वो आप फ्री वाले मॉडल्स हैं जो क्लाउड पे मौजूद हैं, तो यू कैन यूज़ दैट. आज जो हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो सबके लिए feasible होगा, even if someone is using like as low as Forge, a machine which is DDR3, which is basically 4th generation, उस पे भी स्मूथली ये वर्क करेगा. Even if you are using like 8 GB, even 6 GB of RAM, it will work, because obviously बात है slow हो सकता है थोड़ा, लेकिन it will work. Okay. So can you maybe explain just a little bit कि जो क्या इसका डिफरेंस क्या होगा कि अगर वो क्लाउड पे यूज़ कर रहा है और क्लाउड पे यूज़ कर रहा है और वो अपने पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ कर रहा है, Yeah, तो sure. या Definitely. I got your point. सही. मैं भी. Yep. Let's draw it
if I guess we should draw it here. Screen to show रही है, I guess. Yes, we can see. Yeah. Basically, let's suppose this is your computer, right? जो आपकी अपनी मशीन है, सही है. अच्छा, जो हम क्लाउड की बात करें, जो क्लाउड पे मॉडल्स हैं बेसिकली, जो कहीं और से कंप्यूटिंग पावर सेंड कर रहे हैं, वो किसी और कंप्यूटर में पीछे चल रहे होंगे यहाँ पे, और आप यूटिलाइज उसे अपनी स्क्रीन पे कर रहे हैं. अच्छा, इसमें फ़ायदा ये है कि एक एपीआई के थ्रू इस एंड पॉइंट से आपको रिस्पॉन्सेज मिल जाएंगे, ना आपकी मशीन पे स्ट्रेन आएगा या स्ट्रेस आएगा. बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप जैसे लोकल मॉडल इस्तेमाल करते हैं, लोकल मॉडल से मुराद ये है कि आपने अपनी मशीन में एक तो मॉडल इटसेल्फ चलाना है, और जो आपका जो भी रिस्पॉन्सेज हैं वो भी आपकी मशीन पे ही कंप्यूट होंगे. तो ये वाला जो यूज़ केस है, ये उनके लिए रिकमेंडेड है जो कि जिनके पास बेहतर मशीन्स हैं. प्रॉबली व्हेन यू हैव अ जीपीयू एटलीस्ट 8 gigs ऑफ रैम, वी लुकिंग फॉरवर्ड के भाई अगर 8 GB का आपके पास अगर ग्राफिक कार्ड है तो यू कैन यूज़ दिस. अदरवाइज आई वुड प्रेफर रिगार्डलेस कि आप ये इस्तेमाल करें इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट. इट ऑल्सो हैज़ एन एज बिकॉज उसमें कॉन्टेक्स्ट विंडोज डिफरेंट होती हैं, और इसमें रिस्पॉन्सेज और मॉडल्स की वो बहुत ज़्यादा लिस्ट है. बट दिस ऑल्सो हैज़ एन एज. यू ईच सिनेरियो हैज़ अ यूज केस. आई होप आई हैव अंडरस्टैंड इट. Yeah, that's actually makes sense. So अगर आप किसी और का कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, so obviously आपका कंप्यूटर इतना स्लो नहीं होगा, बट अगर आप अपने कंप्यूटर के ऊपर रन कर रहे हैं, so obviously वो स्लो होगा, right? या एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा मैं. अच्छा, अब जो हमारे पास पेड एपीआईज होती है ना बेसिकली, और फ्री मॉडल्स होते हैं, तो लेट्स सपोज दिस इज़ अ पेड एपीआई, राइट? तो होता ये है कि ये पेड इसलिए होती है कि ये जो कंप्यूटिंग पावर है ना इसकी, जो जहाँ जहाँ पे भी जिस भी कंप्यूटर पे कंप्यूट हो रही है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है. द कंपनी कुड नॉट अफोर्ड इट टू रन फ्री. तो इनके प्रॉफिट से ये कुछ फ्री एपीआईज भी दे देते हैं. तो दैट्स हाउ इट वर्क्स. इवन ओपन राउटर हैव ऑप्शंस कि अगर आप पे करके इसको यूज़ करना चाहें, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे हमारे पास जब फ्री एपीआईज हैं तो व्हाई डू वी हैव टू यूज, राइट? द होल पॉइंट ऑफ दिस वर्कशॉप इज टू go cheap and open source. Back again onto slides. There is one more question. Yep. Can it run with 8 GB RAM of integrated? I think it means integrated. Yep. I guess he's saying कि अगर हमारे पास 8 GB रैम हो और वो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हो तो ये रन Yeah. कर सकता है या नहीं कर सकता. तो बेसिकली इसमें कुछ मॉडल्स हैं जो रन कर सकते हैं, बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि कोई इस्तेमाल करे 8 GB रैम के साथ, सिंस दिस इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर द मशीन हेल्थ इटसेल्फ, कॉज देर आर सम केसेस हम कभी रिकमेंड नहीं करते जिनके पास जीपीयू नहीं होता. मशीन्स हैव बीन डेड बिकॉज कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा करनी होती है, तो द पीसी कुड नॉट इटसेल्फ हैंडल. अगर आपके पास पीसी है, इफ़ यू हैव एप्पल अप्रॉक्सीमेटली M1 वगैरह मिनिमम, तो फिर आप देख सकते हैं लैपटॉप्स में. मैं लैपटॉप्स में किसी को भी प्रेफर नहीं करता इवन इफ दे हैव लाइक 40 60 40 80, अनटिल अनलेस वो फिर कोई हाई एंड लैपटॉप है जैसे asus वगैरह का हो गया, रेजर का बुक हो गई. आई होप एक दैट और आंसर्स. क्वेश्चन भी है Yep. कि can I host the model on server and use it in Claude? Just answer yes and no. Can I host the model On server and use it in Claude. What? Yep, you can for with LM Studio there are some roundabouts. हम जैसे ओलामा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस पे. ऑल्सो LM Studio पे भी हमने काम किया हुआ है, बट बाय फार हमारे लिए अभी इतने स्टेबल रिस्पॉन्सेज नहीं आए, लेकिन ठीक इट है. कैन वर्क फॉर यू. या Perfect. So what we're gonna do now is just follow the session, and then after the session we'll take more questions. यप डेफिनेटली. सो अभी तक हमने ये देख लिया है कि हम जो है
क्लॉड कोड क्यों यूज़ कर रहे हैं और ओपन राउटर क्या है, एंड अब थोड़ा हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आएंगे। तो बेसिकली मैक एंड लिनक्स पे ये वाली कमांड्स वगैरह इस्तेमाल हो सकती हैं। इसको अपॉलॉजीज इसको इंस्टॉल करने के लिए क्लाउड कोड को। अच्छा, पावर शेल वाला जो ये कमांड है ये भी इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन हम आज ना ईजियर अप्रोच लेके चलेंगे। पावर शेल पे कर सकते हैं आप इसे, लेकिन इट टेक टाइम। तो हम करेंगे इसे npm से, npm से इंस्टॉल करेंगे इंशाल्लाह। एंड बिफोर दैट हम ये कर लेते हैं कि पहले ओपन राउटर पे जाते हैं और अपने लिए एक एपीआई की जनरेट कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम एक एपीआई की जनरेट कर लेते हैं। सो बेसिकली अब जब भी आप ओपन राउटर की वेबसाइट पे आएंगे, बेसिकली दिस यूआरएल पे, तो यहाँ पे एक एपीआई की का ऑप्शन होगा। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन इट और आप अपने लिए एक यहाँ पे एपीआई की जनरेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज फॉर दिस वर्कशॉप वी आर यूजिंग क्लॉड प्लस ओपन router, and you can set an expiration date as well। मैं तो उसको 30 days या 60 days रखता हूँ। यू कैन पुट अब, अगर आप नहीं बार बार चेंज करना चाहते। फिलहाल के लिए हम इसको कर लेते हैं लेट्स सपोज 1 day एंड विल लीव इट हियर। या अच्छा, जैसे ये आएगा जो भी एपीआई आएगी, आपने इसको ना फ़ौरन से कॉपी कर लेना है, सिंस इट विल नॉट शो अगेन, फिर आपको नई एपीआई बनानी पड़ेगी। एंड आप अपने डेस्कटॉप पे आ जाएं इसके बाद। अच्छा, यहाँ पे कोई सा भी एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना के इसकी एपीआई को आपने यहाँ पे पेस्ट करके सेव कर देना है। अच्छा, ये तो हमने कर ली जनरेट एक एपीआई की, मैंने इसे सेव कर लिया। अब आगे जो है, या आगे इन्होंने कहा हुआ है कि हम कॉन्फ़िगर कर लें। अच्छा, since we are moving on to configuration, let me open the doc and share it with you guys. There is also a doc I have prepared. Let me have a look. Yep, Aisha, if anyone has questions, we can, cater that in the meantime. Yeah, so I don't think ये भी कोई questions हैं, but someone said that I think we can run anti-gravity more conveniently on lower tier RAMs. Anti-gravity is, but I don't know which. It pretty much depends on the hardware, but on average, people are using like i5 8th generation for development these days. So उस पे वो freeze करता है। And the whole point of using CLI tools is to get familiar with the bash, since हम as a developer या फिर as a person जो कि अब since अब वो era है डेवलपमेंट का, इवेंट के टूल्स का, जिसमें CLI पे ज़्यादा रिलाई किया जाता है। देयर इज़ अ यूज़ ऑफ UI टूल्स एज वेल, बट सारे टूल्स हमारे ट्रांजिशन हो रहे हैं IDE से CLI IDEs पे। इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट विम वगैरह, तो यू विल गेट माई पॉइंट। सिंस GUI बेस्ड जितनी भी वर्क फ्लोज हैं उनमें टाइम मैनेजमेंट और जो टाइम का जो वेस्टेज का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। अच्छा, सबसे पहले हमने ये देख लेना है कि Node.js हमारे पास इंस्टॉल है या नहीं है। तो Node.js की यहाँ पे वेबसाइट की मैंने लिंक लगाई हुई है वैसे, एंड यू कैन गो थ्रू दैट। मैं ये शेयर कर देता हूँ मेरे ख्याल से। अच्छा, I've shared the link of the Notion. Can you put it down in the stream? Yes, sure.
Also, someone is asking if we can have this presentation as well. Presentation, yeah, sure. Why not? I'll drop it by. I will drop it at the end of the workshop site. Yeah, sure. सो सबसे पहले हमने नोट डाउनलोड कर लेना है सिंस मेरे पास नोट जेएस हुआ हुआ है लेकिन हम फॉर द ट्यूटोरियल वी हैव टू डू इट तो हम नोट जेएस इंस्टॉल कर लेंगे सो बेसिकली देयर इज़ अ वे कि हम इसके साथ कर लें एंड इसके साथ कर लें सो विल जस्ट डू दिस वन सो नोट जेएस जब तक इंस्टॉल हो रहा है वैसे मेरे पास इंस्टॉल हुआ है तो वी डोंट हैव टू वेट फॉर दैट सो दूसरा जो स्टेप हमारे पास दिया मैं यहाँ पे नोट dash version so basically this is a command what it does कि जब आप अपने यहाँ पे जाएंगे सर्च बार में cmd टाइप करेंगे तो हमारे पास ये टर्मिनल खुल जाएगा तो what it does कि अगर हम लिखेंगे node dash version तो it will show a version number अगर आपको नज़र आ रहा हो आयशा इसको जूम इन कर नज़र आ रहा है जूम इन कर दूँ मैं से नो थोड़ा सा जूम कर लीजिए ओके Someone is asking, can this work on Chromebooks? Can this work on Chromebooks? That's a very sad news, but Chromebooks पे कोई roundabouts नहीं है since it's an Android system. उस पे Claude Code, I cannot say it not run. I would say कि उस पे अच्छा नहीं है इसको चलाना भी. Because this has MCP. Yep. There is another question that what is the difference between Claude and OpenClaw exactly? Oh, sorry. Yeah. So basically, if he's asking about open code and Claude Code, so open code is the similar tool like Claude Code, but it's an open source tool. Basically, open source tool ये होते हैं जिनके कोड इंटरनेट पे पड़ा होता है तो वो कम्युनिटी ड्रिवन है बट दैट इज़ नॉट बैक्ड बाय एनी एंटरप्राइज या फिर उनके पास ऐसा नहीं है कि कोई फंडिंग वगैरह हो जो सस्टेनेबल रखें वो हम लोगों में से ही लोग होते हैं जिनकी कम्युनिटी होती है वो एक टूल बिल्ड करती है और इसे वो लाइव कर देती है जैसे वी हैव माई प्रोडक्ट मुसब्बदा तो बेसिकली हमने एक प्रॉब्लम देखी उसका कोड बिल्ड करके सबके लिए ओपन स्पेस में छोड़ दिया कि अगर आपको कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करनी है तो यू कैन यूज़ दैट एज वेल तो ये फ़र्क है टेक्निकलिटीज़ की बेसिस पे दे आर प्रिटी मच द सेम बट द एजेंट वाला जो मामला है वो बेहतर है क्लॉड कोड में ओके सो मूविंग बैक टू इट एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा क्या So, Tanzil, here's a question from Rahul. yep Yeah, he's asking like, can this work on Chromebooks? And I think you have answered one of the question regarding the server as well. Like Shahid was asking कि क्या हम इसको सर्वर पे अगर हम डिप्लॉय कर लें इस तरह से एक ऑफलाइन मॉडल ठीक yeah है So we और did तो check क्या those we questions. have we have we have we have covered those ओके questions no ओके worries Stella या ओके आई वाज लिसनिंग टू इट बट आई थॉट के लाइक इसको अगर थोड़ा और डिफाइन कर दो ताकि जो लोग हैं कि अगर कोई सही क्रोमबुक को which यूज करना चाह रहा है तो sure अब मुझे वो वाला पार्ट बता दें या इट इज इट विजिबल नाउ या फार मोर या विजिबल या ओके सो बेसिकली हमने जो भी चीज़ डाउनलोड की होती है हम उसका नाम लिख देते हैं मैं पहले कौन से क्वेश्चन पे आना है मुझे वो कंफर्म कर दें मैं उसको बता देता हूँ फिर इसको कंटिन्यू करते हैं आई गेस राहुल वाज आस्किंग कि हम इसे यूज़ कर सकते हैं नहीं राइट हेलो आई एम ऑडिबल yeah, you are audible. I just left actually. Like I don't wanna confuse you, but मुझे मैं actually सुन रहा था तो मैंने कहा कि यार एक दफा इस पे थोड़ा सा डिटेल में थोड़ी सी बता दो चीजें कि if somebody wants to do it ना लाइक अगर वो ऑफलाइन अगर किसी के पास सर्वर है जैसे समटाइम्स AWS के क्रेडिट्स मिल जाते हैं लोगों को या कोई XYZ इस तरह के सॉल्यूशंस हैं सो हाउ कैन दे टेक एडवांटेज टू यूज सच ओके मॉडल्स ओके सही है ओके ना या दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि फॉर एक श्योर छोटा सा इसको 5 मिनट्स की विंडो देके ताकि पीपल वुड हैव अ मैं क्लियर व्यू कि बेसिकली मैं क्या हो सकता है राइट definitely we'll have a look so
मैं यहाँ पे एक स्लाइड का एक पेज शो करना चाहूँगा ताकि हम उसको रेफर कर सकें उस लाइन. सो बेसिकली होता ही है कि इफ़ यू वांट टू यूज़ इट राइट लोकल एलएलएम इस पे, तो यहाँ पे आप अपनी क्या कर सकते हैं, एंथ्रोपिक बेस यूआरएल पे वो वाला राउट ला के दे दें जिसको आपने जिस पे आपने लोकल जो सर्वर चल रहा है आपका, जैसे एलएम स्टूडियो का चलता है पोर्ट 1537 पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या एंड जो राउटर की है ओपन राउटर एपीआई की पे, या फिर आप इसको नेम अपनी तरफ से कर सकते हैं इस पे लाके यहाँ पे डायरेक्टली वो ऑड टोकन की जगह उस मॉडल का नाम लिख सकते हैं, उस मॉडल की एपीआई की डाल देंगे, तो कॉपी पेस्ट कर देंगे तो वो चल जाएगा. ऑल्सो विद द, अब क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर्स की बात हो रही है तो वो मुकम्मल हो जाए तो बेहतर है. बाय फार व्हाट वी हैव ट्राइड विद दिस थिंग, हमने ओलामा, एक वेबसाइट है ओलामा, एक मॉडल प्रोवाइडर से ओलामा यूज़ कर सकते हैं. बट द थिंग इज़ दैट एवरीवन इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स एलएम स्टूडियो राइट नाउ. मेरे पास भी एलएम स्टूडियो में कुछ मॉडल्स हैं, मैं आपको एलएम स्टूडियो भी दिखा देता हूँ. सो वी कैन यूज़ एलएम स्टूडियो एज वेल बिकॉज मैं अगर जिन लोगों के पास लैपटॉप्स हैं एंड दे आर यूजिंग ओलामा, तो मैं उनको प्रेफर करूँगा एक बार एलएम स्टूडियो पे शिफ्ट होकर देखें. दिस इज़ फार मोर फीजिबल फॉर पीपल हु आर यूजिंग लैपटॉप और मच मोर ईजी ऑन द मशीन. वैसे it depends on the model, but this is far more optimized for both desktop based PCs and laptops. I also have here installed, पहले मैं ओलामा इस्तेमाल कर रहा था लेकिन अब तो मैंने इस पे शिफ्ट कर लिया. So this is the suggestion for anyone who is willing to go through local models इसमें. And I would suggest if you are going through local models to use GPT versus 20B first. फर्स्ट प्रेफरेंस वही होगी. देन यू कैन यूज़ लाइक मिस्ट्रल वगैरह ट्राई कर सकते हैं ऑल्सो. और अगर इफ़ एनी वन इज़ इंट्रीग्ड अबाउट दिस होल थिंग, वी कैन डू अ वर्कशॉप ऑन इट एज वेल, या फिर एक छोटा सा सेशन इसमें हम ये बताएंगे ओपन मॉडल्स को कैसे हम एवेलुएट कर सकते हैं, लोकल मॉडल्स को क्या इनमें डिपेंडेंसीज होती हैं. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. इफ एनी वन हैज़ और कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क बाय द वे, अदरवाइज वी विल मूव ऑन टू what we were doing earlier. हाँ, तो हम कमांड पे आ जाते हैं वापस. एंड कमांड वाज दैट के हमने नोड लिखना है. नोड जेएस डाउनलोड करने के बाद अपने कमांड सीएमडी पे या पावर शेल पे जिस पे भी लिखना चाहें, एंड आगे लिखना है डैश डैश वर्जन. व्हाट इट विल टेल के ये जो लिखा हुआ आ रहा है बेसिकली वर्जन नंबर होता है. वी डिनोट्स वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर. अच्छा, ये क्यों हमने यूज़ किया, इसके पीछे रीज़न ये है कि हमें ये जो है नोड जो है ये हमें एक पैकेज भी प्रोवाइड करेगा यहाँ पे npm करके. तो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड इट. ऑल्सो देयर इज़ वन मोर थिंग वी हैव टू टेक इन ऑन अकाउंट कि अगर इसका जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं वो 18 से नीचे हैं आपकी मशीन पे, इफ़ यू हैव इंस्टॉल्ड इट बिफोर, सो जस्ट अपडेट एंड अपग्रेड इट. और ये वर्जन नंबर 18 से ऊपर होना चाहिए इस चीज़ को रन करने के लिए. मूविंग ऑन टू द प्रोसीजर. अच्छा, सबसे पहले आपने करना ये है कि क्लॉड कोड इंस्टॉल करना है. एंड वी जस्ट हैव टू कॉपी दिस. आई हैव प्रोवाइडेड दिस डॉक्यूमेंट एज वेल. वी विल प्रोवाइड you in the community group as well. Or if anyone has problems after this workshop while setting it up, just spam a message. We will definitely take that और हम उसको query को resolve करेंगे. अच्छा, before inserting this command and all, उससे पहले हमें ये पता करना लाजमी है कि इसका मतलब क्या है, राइट? Cause just for the sake of understanding a bit about it, सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर ये आपने कमांड में मिस कर दिया तो ये जो आपका क्लाउड कोड है ये आपकी पूरी मशीन में नहीं होगा, बेसिकली उस फोल्डर में होगा जिसमें ये क्या नाम है, जिसमें ये कमांड चला रहे हैं आप, जिस भी पाथ पे आप कमांड चला रहे हैं. तो मेक श्योर कि हम ये /g वगैरह मिस ना करें. सो विल जस्ट हिट एंटर एंड इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग. So one package is looking for finding npm
So it इंस्टॉल हुआ भी है कि नहीं हुआ, and just hit enter, right Claude and hit enter. So it is asking कि quick safety check, is this project you created or you trust. तो बेसिकली जब भी हम Claude लिखते हैं किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाके या फोल्डर के अंदर जाके इस कीवर्ड के थ्रू, तो वो ट्रिगर करता है Claude को कि हम यूज़ करने जा रहे हैं उसे. बट होता ये है कि सिंस वो एक एजेंटिक टर्मिनल है, तो वो हमसे ये पूछता है कि हमें ये डायरेक्टरी इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या हम ट्रस्ट करें या नहीं. तो मैंने उसको परमिशन दे देना ही है कि आप ट्रस्ट कर सकते हैं इस फोल्डर पे. सो नाउ वी आर इन Claude. सो आई गेस मेरे ख्याल से हमारा काम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा. लेट्स सी कि ये चल भी रहा है या नहीं. ओके, नाउ इट्स क्रैशिंग. एक मिनट. Will hit high, and there is an issue with the selected model Sonnet 4.6. It may not exist or you may have not access. Run/model to pick a different model. Let's see, models में जाके हम देख लेते हैं कि हमारे पास दूसरा मॉडल है नहीं है. अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमने तो Sonnet ही सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये तो चल ही नहीं रहा. सिंस मैंने इसमें Claude की API लगाई भी नहीं है. मैं इसको कहता हूँ प्लान टू मेक अ वेबसाइट. रिट्राई करते हैं. ओके, या हमने इसको छोटी सी बेसिक सी एक प्रॉम्प्ट दे दी, प्लान टू मेक अ वेबसाइट, अ बेसिक लैंडिंग पेज ऑफ ए फूड रेस्टोरेंट. So there is an issue with the selected model. Again we are facing this issue. So यहाँ पे आके वो वाला पॉइंट है कि हमने जो है Claude Code इंस्टॉल तो कर लिया, बट वी हैवंट बॉट द API itself, राइट, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कॉपी की थी. इसको यहाँ पे कंट्रोल सी से एग्जिट हो जाएगा. इसको यहाँ पे एग्जिट करते हैं और हम आते हैं दोबारा वापस अपनी ट्यूटोरियल की जानिब. सो अब करना ये है कि कोई सी भी आपने डायरेक्टरी बनानी है कहीं पे भी, जहाँ पे भी आपको प्रोजेक्ट यूज़ करना हो. रिमेंबर कि हमने न्यू टेक्स्ट डॉट डॉक्यूमेंट में वो API की सेव करके रखनी है. लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, वर्कशॉप का, राइट, वर्कशॉप Claude कोड, CC कर देते हैं इसको ना, CC प्लस ओपन राउटर, या. सो इफ यू हैव अ लुक एट दिस, फिर हम इसमें CMD करके इसमें वो खोल लेते हैं, कमांड लाइन एंड कोड स्पेस डॉट करके हम इसमें खोलेंगे VS कोड, या. ओके, Aisha, do anyone have questions? फिर मैं I'll move forward if not. Yes, we do have some questions here. Okay, so शुरू करते हैं. Shahid is asking, last question regarding local models. How can we check the requirements for local models? That's a great question, Shahid. I should take that as an account. So basically, अगर आपने देखा हो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ. Let's answer Shahid's question first. So we'll go to open router. हम जहाँ पे गए थे ना ओपन राउटर पे, आपने क्या करना है, मॉडल्स पे आ जाएगा शायद. एंड फॉर एनीवन हु इज़ क्यूरियस अबाउट कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो बेसिकली 1 GB ऑफ वी रैम
जो वीडियो मेमोरी है, जो ग्राफिक कार्ड्स में होती है, can easily handle a 1 billion parameter model. So let's suppose यहाँ पे लिखा हुआ है Google Gamma 4, 31 billion parameter. So when you have like 31 GB of VRAM, you can easily use it. अच्छा, but there are some exceptional cases कि हम इसको 26 या 20 GB भी चला सकते हैं, but that is not safe as well. अच्छा, अब एक और जो पॉपुलर हमारे पास मॉडल है GPT OSS, राइट? ऑल्सो क्या? तंजील, अगर आप ये भी एक्सप्लेन कर दें कि जो पैरामीटर्स हैं उसका क्या मतलब है एंड हाउ डज इट हेल्प, कि वो कितनी ज़्यादा है और कितनी कम है। श्योर। सो मॉडल के जो मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स बेसिकली होते हैं जिन पे मॉडल जो है डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करता है। तो आई विल नॉट गो इनटू द मैथ्स, बट लेट्स सपोज कि हम एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि मॉडल हमें कभी जो है रिप्लाई देते ही नहीं है, वो एक प्रोबेबिलिटी पे चलता है, सही है? तो द मोर नंबर ऑफ पैरामीटर्स, am I audible? I guess I got disconnected. You're fine, we can hear you. Okay, yeah. So पैरामीटर्स वो क्वांटिटीज हैं जो मॉडल के साइज को बताती हैं, जो वेट एंड बायसेस से मिलके बनती हैं। बेसिकली इट्स अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट। अगर हम डीप लर्निंग में जाएं तो वो एक ट्रांसफॉर्मर का कॉन्सेप्ट है। उसके अंदर एक सबसे जो बेसिक चीज़ें इसमें आती है वो प्रेसेप्ट्रॉन की ना। इफ़ एनीवन हैड हर्ड अबाउट दैट प्लीज़ डू लेट मी नो इन द चैट, ताकि मैं उसके हिसाब से वो कैब इस्तेमाल कर सकूँ। लेकिन इन अ मैनर के प्रेसेप्ट्रॉन इंसानी न्यूरॉन्स की तरह होते हैं और वो कैलकुलेट करते हैं। बट ऑन द एंड ऑफ मॉडल्स हम ये नहीं कैलकुलेट कर रहे होते कि अगर हम मॉडल से पूछते हैं तो मुझे कायदे आज़म का नाम बताओ, सही है? तो वो ये नहीं जाके समझता कि उससे कायदे आज़म का नाम पूछा गया, सही है? उसकी रीजनिंग, वो इंसान नहीं है, सही है? उसकी समझने की सलाहियत ये है कि वो ये कैलकुलेट करेगा कि इंटरनेट पे उसको जिस भी डेटा पे ट्रेन किया गया हो, तो वो जो उन कैरेक्टर्स हैं ना, जिन कैरेक्टर्स जो उस सेंटेंस में है, उस प्रॉम्प्ट में, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है या एग्जिस्टेंस है, उसको कैलकुलेट करते हुए उसके जो रिस्पॉन्सेज इंटरनेट पे पड़े हुए हैं या फिर उसके डेटा को फेड हुए हैं, वो ला के हमें बेसिकली वो दे देता है। तो बेसिकली द नंबर ऑफ पैरामीटर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। वैसे ये रिसेंटली इसको ब्रेक आउट किया गया है बाय अ रिसर्चर, कि ज़रूरी नहीं है कि पैरामीटर्स जितने भी ज़्यादा हों उतना अच्छा मॉडल हो, बट मेन नोशन यही है मार्केट में कि पैरामीटर्स अगर ज़्यादा होंगे तो इट इज़ मोर लाइकली कि मॉडल्स बहुत अच्छा परफॉर्म करें। बेसिकली उन्हें मदद करते हैं ये रिस्पॉन्सेज और डिस्टेंसेस निकालने में। सो काइंड ऑफ लाइक कॉन्टेक्स्ट, हम इसको सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं, या कॉन्टेक्स्ट टोकन्स। या टोकन्स, हाँ, कैरेक्टर्स को हम टोकन्स कहते हैं बाय द वे इन एलएलएम वगैरह। या और कोई क्वेश्चन? Yeah, so Davar Shayan, someone is asking ke I tried 27B coin model but it failed to load. So basically, Davar Shayan say, I have a question to ask. Davar, what kind of PC you are using right now, और आपकी configuration क्या है? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, I already have Claude Code running in Visual Code, so should I run this command again? कौन Okay, सी okay. कमांड की बात कर रहे हैं? सही मैं समझ गया हूँ, उनकी बात मैं समझ अच्छा, गया हूँ। So okay, that he saying that he have downloaded the extension, I guess, from yeah. the VS Code extension terminal, बट वो चाह रहे हैं कि ये मुझे कमांड चलानी पड़ेगी या नहीं चलानी पड़ेगी उसको डाउनलोड करने के बाद। अच्छा, वो जो टर्मिनल लेवल पे इंस्टॉलेशन है वो डिफरेंट है बनिस्बत एक्सटेंशन लेवल पे इंस्टॉलेशन। सो उसमें जो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं वो OAuth के थ्रू लगते हैं। बेसिकली जब आपने डाउनलोड किया होगा तो उसने लॉगिन करने के लिए मांगा होगा जब आपने खुला होगा से, लेकिन इन दिस स्पेक्ट्रम हम इसको टर्मिनल पे लेके चलेंगे, बिकॉज वो जो है वो एक एक्सटेंशन का अलग
ब्रेकआउट है वो अभी तक कोई मेरे नज़दीक सॉल्यूशन नहीं है मार्केट में, तो हम इसको CLI पे ही करेंगे। बेसिकली टर्मिनल पे हमें करना है तो कमांड टर्मिनल पे ही रन करके हमें इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा इन शॉर्ट। या ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हम बिल्ड क्या कर रहे हैं आज। तो ये तो हमने देखा कि ठीक है हम सेटअप कर रहे हैं और हमने किस तरह से APIs के बारे में समझा, हमने कॉन्टेक्स्ट के बारे में समझा, बट हम एक्चुअली आज क्या बिल्ड करने वाले हैं? या दैट्स अ होल स्टोरी, देयर इज अ होल स्टोरी बिहाइंड इट। सो हम ये करेंगे कि जैसे ही हमारा हम सबका जो भी अभी वर्कशॉप में मौजूद है सेटअप हो जाता है, सो how many first of all how many attendees are there so we can split them into teams और हम responses उनसे लें। I think 26, 25 people. सो हम हम ये करेंगे, विल डू अ प्रॉम्प्ट चैलेंज काइंड ऑफ थिंग कि मैं आप लोग सजेस्ट करेंगे कोई एक प्रॉम्प्ट दे दें एंड विल पुश के कौन कितना बेहतर उसको उस बेस चीज़ जो बनाएंगे हम उस प्रॉम्प्ट से जो भी क्रिएट करके देगा क्लाउड कोड, हम उसको कितना बेहतर कर सकते हैं एंड इवेंचुअली चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और ऑल्सो जो जो बना ले वो हमारी कम्युनिटी में अपना स्निपेट शेयर कर सकता है, सो वी कैन फाइनलाइज कि भाई कौन विनर था इस वर्कशॉप का। क्या Well, someone commented, like, complimented on you. The guy speaking sound like a genius, and yes, I think he is a genius, and that's why we brought him today for you guys. So appreciate it. थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट। ओके, सो बैक ऑन टू द स्क्रीन। अच्छा हाँ, वी वो ऑन द वर्कशॉप थिंग में मुझे वो रिकॉल करवाना पड़ेगा आई गेस। ओके, सो अभी तक हमने ये देख लिया है कि हमने क्लाउड कोड क्यों इस्तेमाल करना है, ओपन राउटर के साथ ही क्यों इस्तेमाल करना है। ऑल्सो हम जा रहे हैं जाने पे कि हम क्लाउड कोड को चलाएंगे कैसे, राइट? कि क्लाउड कोड कैसे चलेगा और कैसे वेरीफाई करेंगे कि हमने वाकई क्लाउड कोड सक्सेसफुली एक थर्ड पार्टी API के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। अच्छा, फॉर दैट पहले आप अपने कोई सा भी फोल्डर बना लें, उसके अंदर आप खोलें क्लाउड कोड। अच्छा, सो there is this thing before moving on forward, हम इस पे कर लेते हैं। एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि या अच्छा इधर आ जाते हैं। सो यहाँ पे जो भी फोल्डर है आपने जो भी आपकी पेरेंट डायरेक्टरी होगी या फिर जिस डायरेक्टरी में आप प्रोजेक्ट रखना चाहते हैं उसके अंदर आप एक और फोल्डर बनाएंगे mkdir.cloud का। आपने यहाँ से कॉपी करना है और आपने लाके पेस्ट कर देना है अपने VS कोड के टर्मिनल पे। अच्छा याद रहे VS कोड के टर्मिनल खोलने की कमांड ये या तो Ctrl+J, यू कैन डू दैट, सही है। और यहाँ पे लाके आपने पेस्ट कर दी mkdir.plot, so you will just enter that and you will see a .plot folder on the explorer inside your ID। अच्छा, जब आपसे ये बन जाए तो आपने यहाँ पे एक और चीज़ क्रिएट करनी है। दोबारा हम डॉक्यूमेंट पे आएंगे, या हम डॉक्यूमेंट पे आके अब हम करेंगे एक फाइल क्रिएट .settings.local.json। अच्छा, अब जब हम इस फोल्डर में आ गए हमने क्लिक करना है, यहाँ पे करना है settings.local.json। अच्छा, द स्टोरी बिहाइंड दिस फाइल एंड द कीवर्ड लोकल रिप्रेजेंट कि हम ये जो भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं ये परसिस्टेंट नहीं होगी, हमें हर प्रोजेक्ट के लिए ये करनी पड़ेगी जब भी हम प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करेंगे। ओके, सो व्हाट डू वी हैव टू डू नाउ कि हम दूसरे स्टेप की जानिब चलें एंड ये जो हमने सारा यहाँ पे एक जेसन का ऑब्जेक्ट रखा है या फिर ये जो भी हमने रखा हुआ है फॉर्मेट में, इसको हम कर लेंगे कॉपी एंड वी विल पेस्ट दैट।
अच्छा, एक चीज याद रहे, ये वाला जो API की है ये एक्सप्लिसिटली एम्प्टी रहेगी एज पर द डॉक्यूमेंटेशन. इट मीन्स कि यहाँ पे हम कुछ डालेंगे नहीं फॉर नाउ. अच्छा, अब जहाँ जहाँ लिखा हुआ है ना योर ओपन राउटर API की, योर ओपन राउटर API की, वहाँ पे आपने क्या करना है, अर्लियर ऑन वी डिड एक सेव किया था हमने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, राइट? उसके अंदर हमारे पास थी अपनी API की, आई गेस आपको नजर आ रही हो. तो जस्ट वी हैव टू कॉपी इट and paste it here instead of this open router API key. Thing. अच्छा, you can put it here also. अच्छा, we just have to save file by pressing Ctrl plus S. And now अब हम जरा क्लॉड चला के देखते हैं कि वो चलता है कि नहीं चलता, because it usually doesn't work in the first go, but hoping for the best. Okay, now it's asking again for the permission. We just have to allow it. And how to check it, right? अब हमने इंस्टॉल तो कर दिया, कॉपी पेस्ट भी कर दी API, लेकिन हम चेक कैसे करेंगे कि बाकी वर्क कर रहा है नहीं कर रहा. सो जैसे आप क्लॉड रन करेंगे तो वो इंटरफेस आ जाएगा जो कि अभी हमने गो थ्रू किया. /status वाली कमांड से हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि क्लॉड कोड बाकी सेटअप हो गया है हमारे अपने URL पे या नहीं हुआ. we'll just put on setup. okay, अच्छा, if we have a look on it, तो ये कह रहा है कि बेस URL हमने ओपन राउटर पे सेट कर दिया है और टोकन हमने एंथ्रोपिक का है किया हुआ. ऑल्सो बाकी सब कुछ इट सीम्स फाइन बाय नाउ. सो लेट्स हैव अ लुक. ऑल्सो कॉन्फ़िग भी देख लेते हैं. या लेट्स प्लान टू बिल्ड अ बेसिक वेबसाइट. आई बिलीव कि हम चैट से पूछते हैं ना, चैट क्या बनवाना चाहती है. गाइज प्लीज स्पैम के हम क्या प्रॉम्प्ट लिखें इस पे, if you guys have any ideas in mind which you have been procrastinating या फिर जो भी. Two people commented. One is saying AI avatar, and the other is saying build an app to rent. Build किस an app to चीज़ को rent. rent करना है आपको? Yeah. Can you elaborate who is saying the app to rent? Any management system, any CRUD. Ask him to make AI stock predictor. AI stock predictor, that would be much. वो उसमें कवर नहीं हो पाएगा. कोई छोटा आइडिया बताएं जो कि हम इस वर्कशॉप में कवर कर सकें. Let's do it. Why not try? मेरे पास एक आइडिया है. अगर हम कोई एक एक्सटेंशन बिल्ड कर सकें, लाइक एवरीवनस बिल्डिंग एप्स एंड ऑल, बट हम कोई एक क्रोम एक्सटेंशन बिल्ड कर सकें विद अ डैशबोर्ड. Okay, let's तो see. Let's वो plan to. तो हाँ. एक्चुअली होगा क्या कि इट्स बेसिकली वन ऑफ द फीचर इन माय ऐप दैट आई एम वर्किंग ऑन. So if you don't mind, we can build that. Otherwise, we can build anything else. No worries. I'm open to it. Just elaborate the idea. We'll give it a prompt. Yeah. So an extension that you can open it in your email box, like mailbox, any mailbox, and it'll read through your emails and then find out if is there any active tasks that you need to do. So we have to Would it be hard? build. Let's try. Why not? We'll give it a shot.
we have to build an extension, Chrome extension. Chrome extension. Okay, Yeah, Chrome extension. Okay, that can work. okay. There is an error. But just before, I would like to say कि ये surprise हो सकता है. अच्छा, error है 402 and it is saying कि you have requested up to 8,000 token, but you can only afford 2456. We haven't, requested 8,000 tokens. Let's see कि क्या प्रॉब्लम आ रही है. Yeah. हम क्लियर करेंगे एंड हम देखते हैं जेसन फाइल को दोबारा. अच्छा, एक चीज़ हो सकती है इसमें, राइट? इफ आई एम नॉट, yep, so we have this configuration also here जो कि सिमिलर है इससे, बट द डिफरेंस इज कि हमने एक चीज़ डिफरेंट की. एक तो एंथ्रोपिक मॉडल मेंशन नहीं किया हुआ, ऑल्सो एंथ्रोपिक का डिफॉल्ट मॉडल मेंशन नहीं किया हुआ. सो अब ये एंथ्रोपिक मॉडल क्या है और डिफॉल्ट मॉडल क्या है, इसको पहले पहचानने की ज़रूरत है. आई इंटेंशनली पुट इट दिस एरर के हम इसको गो थ्रू करें. सो राइट नाउ एंथ्रोपिक 3 मॉडल देता है जो कि पेड है, और in order to bypass them we have to put this line कि हम ये जो डिफ़ॉल्ट मॉडल है इसको सोनेट जो भी मॉडल है इसको सेट कर सकें कॉइन 3.6 प्लस फ्री पे. सो हम क्या करेंगे, बाय द वे डॉक्यूमेंट्स में अपडेटेड है. आई डोंट नो इस वाले में क्यों नहीं शो हो रहा था, बट आई विल हैव अ लुक ऑन दैट. सो इज इट द सेम as before? Yes, I believe yes. Actually, we don't need this open router thing. This is just taking up extra space. Yeah. So let's close this settings.json and let's reopen this folder. Let's see if it's persistent. Yes, persistent तो है, नजर तो आ रहा है. And we'll type again plot. Let's see क्या होता है. Let's say hi. यूजुअली हाई का मैं रिस्पॉन्स दे देता है, और फिर बाद में जब आप इसे पोर्ट करवाते हैं तो ये बोलता है कि आपकी एपीआई में आपके पास टोकन्स नहीं है. Let's Aisha, your let's build, हाँ, yeah, your idea was let's build a Chrome extension Chrome extension with a dashboard, obviously. with a dashboard. And what that Chrome extension will do is you can open that on your mailbox and it will read through your emails. Okay, you can open. So I think for prompting, what we can do is ask, say like, user can open that Chrome extension in their email box. Yeah, okay, got your point. User can open their Email box. extension in the email box. Yeah. And it will read through the emails. Free. Yep. And make a checklist of the tasks that user needs to do. A checklist of the tasks that users need to do. I hope that's, yeah. Let's see if it goes well. Okay, so
It is envisioning. I guess that's a green signal. We have finally. Yep. Yep. I guess we have finally set up Claude Code. Let's see what it will cook. Meanwhile, we can cater questions as well. Okay, so the beauty before moving on to questions, the beauty of Claude Code is why मुझे भी eventually इस पे shift होना पड़ता है कि when we are building planning for stuff which we have to make scalable. So most of the agents fail on the planning thing. So I do have like यहाँ पे और भी chat sessions और यहाँ पे और भी models, लेकिन जो इसकी रीजनिंग है वो डिफरेंट है. अच्छा, नाउ इफ यू हैव अ लुक ऑन दिस, इट इज आस्किंग कि हमें ईमेल सोर्स कौन सी लेनी है. क्या हम ये जीमेल के लिए बना रहे हैं, क्या ये हम एनी Any, एनी yeah, any अच्छा, submit. ओके, या अच्छा तंजीर, अगर आप या मुझे अपना ईमेल एड्रेस भेज दें तो टेस्ट इट आउट. आई एम सेंडिंग यू अ बंच ऑफ ईमेल्स विद बंच ऑफ टास्क. सो इफ यू कैन जस्ट सेंड मी योर ईमेल एड्रेस इन अ प्राइवेट चैट, तो मैं फिर आपको ईमेल करती हूँ. एंड देन व्हाट वी कैन डू इज ओपन अप योर ईमेल बॉक्स एंड देन श्योर, सी कि वो लाइक काम करे नहीं. श्योर, व्हाई नॉट. I hope there aren't no rejection letters for any companies right now. I usually have them a lot. It's okay. It's always the starting point of somewhere. Yeah. Yeah, I've sent it that. Yeah, I'm gonna spam you now. Sure. अच्छा, एक comment है शाहिद का कि I did not understand one thing, whether currently you are using paid or free models. If free models, are those models local or on some servers? Okay, okay. Yeah, that's a great question. I like the way लोग इंटरेस्ट ले लें. तो बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं, अभी हमने एक चीज़ देखी यहाँ पे, मैं दोबारा गो थ्रू करा देता हूँ कि हम कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं. तो अगर हम सेटिंग्स डॉट जेसन देखें तो यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा था क्वेन 3.6 प्लस फ्री, राइट. अब इसको कॉपी करके ना हम क्रोम में देख लेते हैं. मीन वाइल आयशा इज सेंडिंग मी द मेल्स ताकि हम इसे टेस्ट आउट कर सकें. सो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं क्वेन 3.6 फ्री. सो बेसिकली हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं आज मॉडल, वो ये मॉडल है. वाई वी आर यूजिंग इट, एक तो ये कैटेगरीज में अगर इसकी जाएं तो अभी प्रोग्रामिंग में नंबर 1 पे है प्री मॉडल्स पे. एंड देयर आर डिफरेंट डोमेन्स एज वेल. द ब्यूटी ऑफ दिस वेबसाइट कि हमें सारी डोमेन स्पेसिफिक रेटिंग्स मिल जाती हैं. ऑल्सो इसकी लेटेंसी बहुत अच्छी है और आउटपुट जो है इसका सबसे ज़्यादा आता है. इवन इट्स अ थर्ड. द प्रॉब्लम विद द मॉडल्स राइट नाउ, अगर आप कोई और सा मॉडल इस्तेमाल करेंगे, मेरी नज़र में JLM के मॉडल्स सही हैं, इवन इफ इट्स अ ग्रेट मॉडल, बट विद क्लॉड कोड लेटेंसी इशूज आते हैं. अगर आप इनपुट दे रहे हैं प्रॉम्प्ट का, तो उतनी जल्दी ये जो प्लान मोड खुला है, जो बेसिकली जो एज इट इज़ जो रिस्पॉन्स होता है हमारा, जैसे GPD वगैरह पे हम लिखते हैं प्रॉम्प्ट, वैसे ही वो पूछ लेता है. तो इसकी और इसकी लेटेंसी सेम है जो भी होस्टेड मॉडल. लेकिन अगर आप कोई और सा मॉडल इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है. जब भी आज हम कॉइन 3.6 प्लस का इस्तेमाल कर रहे हैं, इफ़ यू वांट टू गो पेड वगैरह तो हम जा सकते हैं इस मॉडल पे, GLM. वी कैन गो विद दिस मॉडल इफ एनीवन वांट्स टू के पे वगैरह करके वो इस्तेमाल करें. तो ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है April 1 को, और इट इज़ ग्रेट. आई एम यूजिंग दैट एज वेल, बट ये पेड मॉडल है तो ये आपको प्राइस ही बढ़ सकता है. या
I guess we should go back to VS Code. Guys, I just CC कर दिया आपने मुझे? या मैंने ईमेल सेंड किया आपको. ओके, मैं मेल्स लिख लेता हूँ. मीनवाइल ये प्लान कर रहा है. आयशा बताती जाएगा, मैं प्लान कर रहा हूँ उसको. ओके. You want it to be React वगैरह या फिर या React is good. Yeah, let's use React. do you want to use AI NLP techniques or keyword pattern modes या We both? kind of have to, right? ANLP Sorry? is good pattern Okay, matching. okay. आई थिंक बोथ, अगर क्योंकि वो रीड करेगा तो पता कैसे चलेगा कि वो टास्क एक्टिव है कि नहीं है, यू नो. Yep, exactly, because अगर हम एक रिस्पॉन्स को लेके चलेंगे तो will eventually it will cost us more time. या बिकॉज ये मैं लाइक स्टूडेंट्स के लिए कि अब हमारे पास बहुत सारे असाइनमेंट्स ईमेल्स पर आते हैं तो कुछ मिस भी हो जाते हैं एंड देन हम उनको रीड करना एंड देन बहुत सारे असाइनमेंट्स के अंदर से टास्क को ढूंढना और फिर निकालना. तो आई थिंक कि एक अच्छी एक्सटेंशन होगी कि कोई भी अपना ईमेल अपने उसमें प्रॉपर लॉगिन करे, कोई भी अपना ईमेल प्रोवाइडर. और ख़ास ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स की ईमेल्स होती हैं वो आउटलुक पर ही होती हैं, माइक्रोसॉफ्ट पे. तो उसको एक्टिव करें हम एक्सटेंशन को एंड देन वो एक्सटेंशन जो है वो स्क्रैप करे, रीड करे एंड देन वो एक चेकलिस्ट टास्क की तरह बना दे. जैसे ट्रेलो के टास्क होते हैं, एक कैनमैन बोर्ड अच्छा सा बन जाए. तो वो तो हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं बट वो तो फिर बाद में हम करते भी सकते हैं. लेकिन मेन थिंग कि वो उसको स्क्रैप करके रीड करे और फिर वो चेकलिस्ट बना सके. Yeah, but we also since अभी recently online हो गई थी classes and we are looking forward के हम half year hybrid जाएं. This is a great idea. It will work out. Even the guys who have been planning to start startups which are related to carpooling, they are Yeah. going good these days. There was this very story time. There was this very startup by my dear friend Uzair Bhai, and his startup name is Saath Chalo because uh, it was a carpooling thing. The name itself, explains the whole Yeah. story of the app. Good idea. And they have managed to gather an audience of like 2,000 people across Karachi, and it's going doing great. These days, it's going great. 2000, that's good. Yeah, but approximately we have collected like 4 universities. That's good. So meanwhile it's building, we can take questions and we can also cater your ideas. We will put this as well. Yeah. Okay, do you want to manually approve or auto accept edits or refine the with ultra plan on the cloud code on the web? Tell me, Asha, what to do. What will I you think prefer? Yeah. manually. Yeah. That is the best way to if you are building a product which you want to scale, you can do prototype by typing with the autos accept edits, but we Yeah. would on our experience, Aisha itself is a founder of multiple products. We have seen the products which are web based also, which have less CRUD operations or which have not very scalable infrastructure, या हम उसे मिड स्केल की भी एप्लीकेशन नहीं कह सकते. उस केस में आप ऑटो एक्सेप्ट एडिट इस्तेमाल करें. बट ऑन द अदर हैंड वी वुड नॉट सजेस्ट कि भाई अगर आप कोई भी चीज़ बिल्ड कर रहे हैं आप मैनुअली ना देखें. मैनुअली देखना अच्छा है, वरना वाइब कोडिंग बोरिंग हो जाती है. ओके, नाउ इट्स बूडलिंग. मीनवाइल जो आयशा के टास्क हैं वो भी हम देख लेते हैं, सो वी कैन डिवाइस अ प्लान अराउंड दैट. Performance and reliability. Yes, global patterns are allowed in write operations. Please specify an exit file path. Will allow that. It is asking कि मैं SRC में जाऊं या नहीं जाऊं. So right now it's using
2.5 के tokens. अच्छा, अगर ये क्लाउड के नेटिव मॉडल्स पे होता तो इट वुड बी अराउंड लाइक 1500 to 1200 टोकन्स आई प्रिज्यूम, सिंस उसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है. ओके, इन्होंने एक टास्क डन कर लिया है. लेट्स सी टास्क क्या है. ऐसा कंट्रोल टी से हम टास्क देख सकते हैं, शिफ्ट टैब से टाइटल देख सकते हैं. सो राइट नाउ इट्स थिंकिंग and sort it for 1 minute. Now let me create all files and let me start with the scaffolding. Yeah, it has started making the extension folder and it has created the src folder as well. Yeah. Acha, Tala is in. Yeah. Hi Tala, how are you doing? Hello. Yeah. I was just having a meeting with someone, so I went over there. So how's it going? It is going by Oh, far great. Yeah, we are on our way to build a feature proposed by Aisha, and oh, yeah. what feature by the way? Basically, it's a feature. We'll build an extension which will go through our emails and take log of our homeworks and assignments and present it to a dashboard so we do not miss it, because usually we have like students mostly face if the assignment is CC to them and eventually अगर वो delete हो जाती है mail तो फिर वो assignment रह जाता है. तो what it will do, it will automatically go through the emails of that particular, we have to give access to that, और Yeah, फिर वो एक लॉग बना के डैशबोर्ड पे शो कर देगी आपका असाइनमेंट ड्यू है और ये नहीं है. nice. One more thing you can do, like I have seen a lot of people जो कि लाइक जिनको गूगल क्लासरूम पे असाइनमेंट मिलता है, ठीक है, एंड दे कैन इवेंचुअली टेक एडवांटेज ऑफ इट कि अगर आप गूगल की एपीआई यूज करते हो, सही है, तो आई नो यू कैन गेट अ होल्ड ऑफ इट और उसकी बेसिस पे आप वो होल असाइनमेंट भी एआई से करवा सकते हो कि लाइक यू जस्ट पास दैट पर्टिकुलर असाइनमेंट और टास्क टू एआई और वहां से आप उसका रेस्पॉन्स लेके वो सबमिट भी कर सकते हो. तो दिस इज ऑल कैन बी डन, जिसमें असाइनमेंट I भी नहीं hope रहेगा my I and hope my university doesn't see this, otherwise they will confiscate my degree. yeah, I am and I know a guy that made similar kind of thing, but वो actually क्या करता था, वो जब कनेक्ट करता था ना तो उसके पास अप्रूवल के लिए आता था कि यार दिस इज योर असाइनमेंट, ये असाइनमेंट आया है इसकी डेडलाइन इस दिन है, ठीक है. सो वो उसके कैलेंडर पे भी मार्क हो जाता था कि तलहा प्लीज टेक अ लुक एट इट बिफोर आई सबमिट इट विद इन दैट टास्क. तो वो जब उसको देखता था और अप्रूव करता था ना तो वो जाके चीज सबमिट हो गई. सो लाइक इट्स अ फन पार्ट ऑनेस्टली. Right now I'm seeing a lot of people complaining about Turnitin and other plagiarism tools जो कि उनका लिखा हुआ थीसिस और मास्टर्स का जो रिसर्च पेपर वगैरह जो चीज़ें होती हैं या जैसे आजकल तो लोग हर एक जगह रिसर्च कर रहे हैं करंटली, तो उनके जो रिसर्च पेपर्स में प्लेजरिज्म आता है ना, तो जो वो खुद से भी लिख रहे हैं वर्ड जो सारी चीज़ें, तो दे आर साउंडिंग लाइक एआई बॉट्स. तो वो उसको ना एआई डिटेक्ट कर रहा है. also this तो research thing. I have made a tool, it's on its way. Recently या I had this very encounter with my professor. He asked me to do a research paper, and I didn't know how to do latex because it's a whole scripting ओके language. या So आई सी या there are very few resources across the globe, और एक वेबसाइट मिली जिस पे वो प्रॉपरली लेटेक्स कर रहा था डायग्राम्स के साथ. तो आई हैव यूज्ड दैट, बट इट हैज सम ड्रॉबैक्स एंड आई हैव फिक्स्ड दैट, और हम इंशाल्लाह वो इस मंथ में लॉन्च कर देंगे. We'll Nice. Looking we'll share forward. Looking share forward. share it to the community soon. How far are we, guys? We are on the. I'm making a meta prompt for the further procedure. Yeah, I was going through your mail. It's just some random emails I sent you. उसमें बहुत सारे टास्क हैं, and that was the main point कि वो टास्क को आइडेंटिफाई करके उसको लगा लेते इस चेकलिस्ट में. Okay. Yeah, say it. Before that, we should go to this plan thing.
Yeah. Well, actually, try to run the project, right? Try to run the extension. Let's see what it does. Although it will not run, I know. लेकिन देखते हैं क्या होता है. Yep. So is temporary rate limited? Please add your own key to accumulate your rate limits. Okay, I guess my rate limit has been exceeded somehow. No, I believe that's not the case. Yeah, there it is. There is another saying. So it has wrote. Yep, it's making it right now. और वो कोलैप्स कर गया था मेरे ख्याल से ओवरलैप किया उसने. Yep, it did overlap and it asking me again. So by far इसने बना के दिया हमें कॉन्टेक्स्ट एक एक्सटेंशन का फोल्डर बनाएगा उसके अंदर मैनिफेट्स बनाएगा and packages and we have this whole directory structure. Let me close this for better visibility. And it has proposed implementation stuff के project scaffolding की जो स्टेप है इसके अंदर ये क्या क्या बनाएगा. इट इज सेइंग के एंट्री पॉइंट्स बनाएगा पॉपअप डैशबोर्ड एंड कंटेंट के एंड पैकेजेस एंड रिएक्ट वगैरह सेटअप करेगा. एंड इट हैज़ आल्सो प्रपोज कि ये फाइल्स कैसे बनाएगा एंड वी शुड गिव इट द परमिशन टू गो अहेड एंड इट इज़ ओवरलैपिंग. या सो बेसिकली अभी हम फर्स्ट स्टेज पे हैं एक्सटेंशन बनाने में विच इज स्कैफोल्डिंग एंड मीanwhile इट्स हैपनिंग. इन द चैट कैन यू गाइस टेल मी कि किसने अभी तक गो थ्रू करके जो है सेटअप कर लिया है सो वी कैन आस्क देम इफ दे आर डूइंग गुड और नॉट. सो इट हैज़ आस्क्ड मी कि हम webpack config.js में कोड डाल सकते हैं. सो इट्स राइटिंग right now and it has created one more file with the classes email data and it is overlapping again. Yeah. Storage.ts. So basically this will be a local storage thing Aisha, if I believe, right? For the time being अभी local storage पे हम इसे run करके देखते हैं. If you had time हाँ, कि हम because API वगैरह लगा लें. okay, sure. अच्छा हमारे पास क्वेश्चन है in the meantime. Sir, for Claude Code we need to pay the amount. अच्छा, for this whole setup you don't have to pay a single penny, but for the Claude Code itself अगर आप उसे खरीदना चाहते हैं तो आप you have like two plans. One is for like $20, but for the first time subscription I believe वो 60% off देता है which will cost you around $8 and वो डॉलर रेट पे आप कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है हमें कितना बनता है. आई वुड नॉट सजेस्ट इनिशियली कि आप उस पर जाएं. आप पहले इसको एज अ टूल इस्तेमाल करना सीख लें एक्सटर्नल एपीआई के साथ देन यू कैन गो टू इट. दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन इन माय पर्सपेक्टिव. और मंथली आपको कॉस्ट करेगा $20 वाला प्लान अराउंड 5600 प्लस टैक्स इंक्लूडिंग टैक्स बल्कि. सो वी आर जस्ट गिविंग इट परमिशन सिंस हमने मैनुअली अप्रूव करने को कहा है. ये एआई एक्सट्रैक्टर बना रहा है. आई बिलीव दिस इज द सिस्टम प्रॉम्प्ट फॉर दैट. लेट मी. या सो बेसिकली व्हाट इट डज के ये कह रहा है कि एक प्रॉम्प्ट लिखो और जो भी आप ईमेल से कंटेंट निकालो उसे जेसन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में आप डिफाइन कर देना. सो नाउ इट हैज मेक अनदर फाइल और ये परमिशन मांगे हमसे.
Do you have any more questions, Aisha? Questions तो नहीं है, but is there some other fees AI models like one which you recommend? Oh, is there some other free AI models like one which you recommend? Uh, uh, so it's a very personal thing for it's more like it's not about the tool, it's all about the person. So basically, if you are just starting out, so I would say कि आप क्वेन से ही स्टार्ट करें, बिकॉज क्वेन जो है वो बहुत अपडेटेड रहता है। पहले मैं कहता था कि डीप सीक से स्टार्ट करें, बट आप लेफ्ट इट ऑफ लाइक 3 months अगो। लेकिन क्वेंस इज अ ग्रेट वे टू स्टार्ट। अब क्वेन कोडो। Acha, actually, I am searching the best tool for deployment also, but all are paid as around $10 to $20 per month. Would you please suggest me best one like Railways or Render or other? Okay, you're talking about the deployment, backend deployment, yeah, model deployment. I would suggest for that, and you can go render. I've worked with it, and it has gone good for me. It's most about experiences and the project scenario, but the render works for me. So you can use it. You can use render. Now it's creating a final React file, which is index.html. So meanwhile it's happening, let's not make it boring and ask in the audience also how many CLI tools have they been using, and what have their what is their experience so far with other thing apart from Cloud Code. Anyone in the chat can answer, and feel free to question me as well if anything you go around or वो समझना है आपको. Also, this cute little sorry, yeah, I should go ahead. No, I was just saying that it's good that it is telling you how many tokens it's using. Yeah, So, exactly. yeah. It's really great because open code tells after the end, because if you have a look at it, so it will tell you piece by piece. Yes. After generating code, it will tell how much this snippet have costed. But in open code, it won't tell until the last of the session. It will give you an accumulated and sum of all tokens which have been used by far. That is I like about it most. Also, so now it is saying again we have bypassed, so it will. Yep. Someone is saying that really great tool, Claude Code. I never seen before any such tool. Uh, yeah, that would do great. Yeah. So this little cute thing right here, it's random, and Yeah. it is there not to bore you. You can ask him things also. Meanwhile, it's running. I wouldn't bother him right now. But there is this very startup by Talahai, and it is like my pet, if I'm not wrong. It is your CLI cat and dog. Basically, when you are using command line and you are bored, you can feed it also. So these are little things which matters a lot because it itself is a feature, right? So हम ऐसे Yeah. छोटे छोटे snippets prototype करके we can make like bigger things, and these if a company like Claude accepts it, you can go like they will buy it for sure, like in millions. You can go big with small things. In the community I have seen uh,
multiple things regarding extensions. And recently I was making with my friend uh, the extension which was very popular back then. Everyone was making the far thing, the far sound effect. And inside VS Code, when you encounter an error, so the speak the machine will generate a sound far. So, and it has crossed 6K downloads in like 7 hours. So that's the potential of vibe coding if someone is putting it down. I think I can bet you that all the 5,000-6,000 people who downloaded are men's. Yeah, I would say most of our audience was men. Yeah. Right now it's around, I guess, 10K plus. Uh, so good apps are installed now. It update to app pack. That's good. It is holding up till now. Means it's really good. Okay, it is asking if we can install and copy HTML. Why not? Yeah, don't ask again for empty install. Nahi, I'll do a manual edit. Yeah. Also, Aisha, can you send me the link to the live so I can go through the chat as well? So Uh, you can, I think, also do that. Do you see? okay, yeah. I see the comments here. Yeah. Okay, it was all fun. Oh, Jamal is here. The guy I have created alongside is here in the comments. Yeah, it was fun, Jamal. By the way, thank you for joining. Saad Ali. Saad Ali is here. Hi, Saad. How are you doing? Mohammed Salman, thank you for joining us. Asha, I hope I will get equity in your startup if this feature ships. Sure. We'll talk about it. So this By the is way, actually yeah, not the application that I'm currently working on, but that's one of the feature of my ideas that I'm going to build next week. तो मैं क्या कर रही हूँ, like I'm making a small startups or small like micro SaaS maybe every month. yeah. And जितने भी मैंने अभी तक बनाया है, I build it for other people. The first thing that I'm building right now is just for me. So I've had really bad experience in the past. जब मैंने like it was my ideas and people who I trusted betrayed me and took it and blah blah blah. जो सबके साथ होता It, है. it it happens. It happens a lot in the Yeah. in our industry. People Yeah, tend to I know. get fear by you and Yeah. your potential. Which is okay. I mean, it's okay. It's fine. We're not together anymore, but it's okay. So right now, I'm building like a SaaS tool for speakers like us, you and me and Talha. And I'm calling the one line that I can describe it. It's for speakers and by speakers. Oh, Um, that's a and great then tagline. I'm gonna share you the link soon. I'm gonna still have to launch it. तो मैंने एक लास्ट वीक अपने आप को चैलेंज दिया था दैट आई वुड लॉन्च इट बाय फ्राइडे, बट वो नहीं हो पाया बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स आई वाज इन्वॉल्व्ड इन, और फिर कम्युनिटी और बहुत सारी चीज़ें अलग से, सो आई कुडंट डू इट. बट देन आई थॉट ओके आई एम गोना लॉन्च इट टुडे संडे, बट स्टिल मैं आज भी नहीं कर सकी उसे लॉन्च बिकॉज ऑफ द सेशन टुडे. अब इंशाल्लाह लेट्स सी के I'll probably launch it this week, inshallah. Well, looking forward to it. Do let us know and pin it in the community as well. We're Yeah. looking forward to it. By the way, someone has asked a question. Rahul has asked, is it possible to control token spend? Mhm. Rahul, it is possible, but I cannot tell explicitly to
Claude Code, you cannot use tokens up to 400 or 1100. You cannot explicitly define the number, but how you can control it is by giving it an input which is far more detailed, not in terms of the length, but in terms of the context. बाय मीन्स ऑफ दैट मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आप इसे कोई प्रॉम्प्ट लिख के देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉम्प्ट 3-4 पेजेस की हो जब ही समझाइए। ये ज़रूरी है कि आप जो लिख रहे हो वो बहुत कंसाइज और क्लियर हो, ताकि वो फंबल ना करे। तो फिर हम टोकन काउंट रिड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली देयर इज़ दिस थिंग कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग वगैरह, इफ़ यू गाइज हैव हर्ड अबाउट इट। सो OpenAI हैज़ मेड डॉक्यूमेंटेशंस अराउंड इट, जिसके थ्रू आप प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स के थ्रू ये चीज़ कंट्रोल कर अच्छा, सकते हैं। मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में कॉन्टेक्स्ट समझाया हुआ है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है सबसे ज़्यादा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में जो कि पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, और किस तरह से उसको मैनेज किया जा सकता है, और फिर टोकन्स क्या होते हैं और किस तरह से वो हम उन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं। So I'll share the link here. I think give it a read. It's free to read, and it's also like very extensive. Yeah, drop it by, I'll read it. Do you want me to share it on the screen and read it as well? Give it a quick go through, or do you want to share your screen? I'm open to that. Oh no, it's Mean, okay. I'll just drop it in the chat. okay, yeah. तो मैंने 2 आर्टिकल्स लिखे थे, एक फॉर कॉन्टेक्स्ट एंड एक फॉर टोकन्स। तो आप दोनों रीड कर सकते हैं। आप उसके अंदर देखिएगा कि कॉन्टेक्स्ट को किस तरह से, लाइक हाउ कैन यू मैनेज कॉन्टेक्स्ट, और ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, और इसी तरह से टोकन्स होते क्या हैं, उनको मैंने बहुत आसान अल्फाज में लिखा है। सो ट्राई रीड इट आउट। So people who are just starting out with this whole AI, coding thing, या I would suggest कि जितना ज़्यादा आपका there is this thing word pool and top P and top K, बहुत टेक्निकल टर्म है, लेकिन I'll concise it कि अगर आपका word pool बड़ा होगा ना, तो your prompts will be far more better. To use open Gmail or Outlook in a tab, click the extension icon in the toolbar and okay, in the अच्छा, मैं extension. पोस्टिंग नहीं कर पा रही हूँ फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाई। Should I drop it? या आई Substack. सेंड इट इन द प्राइवेट चैट। Sure. I'm dropping it in the chat. Okay, you have given both links, right? I'll share it. I guess Tala, can you drop it? Drop the comment. Drop it as a comment. I'm having problem. This is saying this comment has failed to post. I guess this is OAuth issue. या Although I've logged in, yeah. This has OAuth issue. I've logged in with the same account, but it's not working. Okay, it's saying us to open Gmail, Outlook, or Yahoo, and click the extension icon in the toolbar. ओके, So I've never used extension in Yahoo. Let's see how it goes. लेट्स सी। So here is this thing. I guess it extension का option नहीं यहाँ पे नहीं है. Let me have a quick look. फिर मैं extension wallet app पे ही खोल देता हूँ उसको.
I guess I shall have to go through it. Just wait a second. I have a lot of emails and I couldn't figure out where the option was. So basically, Aisha have sent this email. Also हम इस पे go through करते हैं कि extension लगाएं. If I'm not wrong, यहीं पे option है extension का. I guess हाँ. Also time is about to end, Aisha. We have to stop it here, but we'll soon update it about it. I haven't looked on the clock as well, so we can take It's okay. questions. We can take We questions. have actually like 10 minutes, 9 minutes left. So if is there Yeah. anyone have any questions, please feel free to drop them in the comments here. We'll happy to answer. Shahid Khan is asking. I didn't understand. Okay, it's an old message. I'm Oh up yeah. there. Okay. Yep. Tala has shared about Yeah. tokens and Thank context. you. Yeah. Also, in the guys in the part two, if you guys want part two of this, so we can do a 60-minute session for MCP and stuff because it's a critical part of uh, Claude Code. It's a vital thing which has been introduced by Anthropic, so we can go also through that. Aisha, you can continue. Yeah, so I guess if is there any no like I don't see any questions anymore in the chat, so we can assume that no one has any questions and everything was great. Thank you so much Tanzil for this in-depth guidance आपने जो समझाया इतने डिटेल में एक एक चीज़ को open router, context, tokens, everything. It was great. Yep. And I think Yep. uh, Shahid Khan. Shahid Khan has commented something. I understand one I thing that it. Yeah. Sure. Sure. Go ahead. Apology. so he's thinking that we don't have to pay for the Claude Code, any subscription, anything. We can just the use any models from the open router, and then that's the best way we can do. Yep, exactly. Got my that's the whole point of the workshop was to you can use Cloud Code. You don't have to pay for subscriptions for Yeah. everything. So we can empower builders and give them tools which are being used in this industry as well. So we can give leverage to those who want to build by using such tools which have been set on the standard. Right now, Cloud Code is the standard among the developers Hmm. and it is dominating. So the whole point of this workshop was that. I hope you guys have gone through that. Also, if you guys have any kind of questions regarding setting it up, also if you have questions regarding commands, and if you think that something is in the doc is not working anymore, since these things change day by day and hourly. Basically, if
If the command Yeah. was working few hours before, it might not work 4 hours, after. It happens a lot in this industry. So we can help you with that. I guess we should stay for like 5 more minutes or 4 more minutes. That will round clock, and we'll close. Thank you everyone for joining today. I feel like it's a big taboo कि भाई क्लाउड कोड, जैसे मैंने इनिशियली भी बताया था कि क्लाउड कोड is like a big thing or like a big fish or something. People don't even try it out. So I have a feeling now that after this session, people are a bit more confident of trying Claude Code. If any one of you have any questions, please feel free to drop it in the comment, or the experience, if you guys understood or was it helpful or not. We also accept criticism. That's okay too. Yep, if anyone has questions, we are here. Feel free to drop it by. Will surely. Can you please share the clickable link of the document? Okay, it's not working. Which document you are talking about? The one. Okay, Talabhai, I guess you have to share those links separately. I guess that's they are not opening. Okay, you guys were terribly great. Thank you for your love. If it was like if you forgot to write the last word that you just wrote, I think that would be a bit misunderstanding. Okay, how do you consider that I have to use this model before selecting example? Select. Okay, how do I consider that? Okay, so basically he's asking कि मैं choice choose कैसे करता हूँ और मेरे पास choices कैसे होती हैं. So I usually go to rankings या फिर Swebench अगर आप लोगों को पता हो. It's a benchmark website for models. So I usually go through this website and यहाँ पे कुछ मॉडल्स आ रहे होते हैं तो मैं उसके अराउंड देख लेता हूँ which works for me. ऑल्सो इसमें सारे मॉडल्स हैं जिसमें आपके पास पेड हैं और फ्री मॉडल्स भी आते हैं. तो जो जो लीडर बोर्ड पे होता है यूजुअली यूज देम और इट गेट्स अपडेटेड वेरी फ्रीक्वेंटली लाइक इन आवर्स. सो दैट्स हाउ आई डिसाइड माई मॉडल्स कि किसके साथ जाना चाहिए. Shanin Ansari, Samreen Gayum. Thank you for joining us, Samreen. I guess that's it for today. I shall leave, and thank you guys for joining us all. And if you have any queries regarding setting it up, and if you are having any trouble, and do let us know in the community. Will actively support you and empower you. And hope your open source journey with Claude Code goes well. Thank you so very much, Tanzil. It was such a great session. Thank you so much for all your insights and for joining us today and for all your time. Thank you so much, everyone who joined us today. Um, Over to you, Telha, if you're here. Thank you so much, Yasmi. If you guys have any question, feel free to reach out. You have everything, all of our social medias and everything. So if you have any questions or if you stuck somewhere, you guys can reach out to Tanzil on LinkedIn or in the community, and then we'd be happy to help you out.
Okay, I guess I shall go now. I have a meeting. Yeah. Bye. Thank you, Tanzia. Bye bye, guys.